जहां पर हमने कल छोड़ा था कि तो कल हम पहुंचे थे किधर। बेसिकली हमने वो यूनिट शुरू किया था तो उसमें हमने किए थे गाउसेस फॉर्मूले, फिर हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ गाउस तक पहुंचे थे। तो वहां पे कुछ हमें डिराइव करना है, राइट राइट। ओके, यूनिट राइट। तो हमने की थी फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ गाउस, उसमें पहले थे गाउसेस फॉर्मूले, जिससे हमने फिर डिराइव। तो बेसिकली वी वांटेड टू शो दैट Gaussian curvature can be found if we know EFG and there is a formula. So that's theorem agree। तो उसमें हमने फिर एक्चुअली हमें ये प्रूव करना था that you can try, क्योंकि पहले हमने किया है कि जो Christoffel symbols है that can be written in terms of EFG and its partial derivatives। तो जो हम गाउस की जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है is that t square is equal to 1 by 2 twice f sub uv minus evv minus guu plus m square e plus twice m mu plus mu square g. Then I have minus l n g plus l nu plus small lambda n times f plus lambda nu g. Okay, this is what we have to show, because if that is true, that means t square can be written, of course you have got this lmn and lambda mu nu, वो तो पता ही है तुम्हें, they are the Christoffel symbols which we know can be written because of the previous theorem in terms of EFG and its partial derivatives. If this is true, then t indirectly can be written in terms of the partial derivatives of EFG and of course EFG। ओके, तो हमें इससे मिली थी फ्रॉम गाउसेस फॉर्मूला बेसिकली तीन इक्वेशंस। एक तो ये था कि लेट मी कॉल इट आर यू यू डॉट आर वी वी इज इक्वल टू एल एन प्लस okay, it was this ln, which are the second order fundamental magnitudes, ln small ln e plus L nu plus lambda n times f plus lambda nu times g, इसका मैंने नाम दिया था 1। Then I had got R U V dotted with itself बराबर है m square plus small m square e plus twice m mu f plus mu square g, इसका मैंने नाम दिया था सेकेंड। और सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव्स हमने इवैल्यूएट किया था बाय differentiating. We had found that EVV minus plus GUU minus twice FUV, ये हमें मिला था equal to, let me write it down, twice R sub UV minus dotted with R sub UV minus R sub UU dotted with R sub E। और I should just flip it, मुझे लगता है बेटर ये है कि मैं इसको ऐसे लिखूं, मतलब फ्लिप करूं।
चलो मैं इसको इरेज करता हूँ, यानी मैं लिखूंगा ये, तो तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, दिस इज इक्वल टू ई सब वी बी प्लस जी सब यू यू माइनस ट्वाइस एफ सब यू। ये हमने डायरेक्टली इवैल्यूएट किया था बाय पार्शियल डिफरेंशियल, लेट्स कॉल दिस 3। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, वी कैन जस्ट, जो मैंने कल कहा था एडिंग, यहाँ पर हम पूछे थे 1 and 3 and subtracting what? Subtracting, मेरे कुछ गलत तो नहीं लिखा ना, हाँ इसको एक्चुअली 2 भी हम यहाँ पे लाते हैं ताकि ये ज्यादा इजी हो जाए। बाय दैट आई मीन ये 2 यहाँ पे हटा के हम दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे, सो दैट आई गेट दिस, क्योंकि फिर क्लियर रहेगा। एंड सब्ट्रैक्टिंग सेकंड, अगर मैं इन दो को ऐड करूंगा, ये सब्ट्रैक्ट करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड विल बी 0, राइट, क्योंकि इसको ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और चूंकि मैं सेकंड सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये इसके साथ। सो मेरा आई विल गेट 0 इज इक्वल टू ln, इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, है ना, सो इट वुड बी ln प्लस ln e प्लस l न्यू प्लस lambda n times f plus l न्यू g minus m square minus m square e plus twice m mu times f plus mu square g plus 1 by 2 into EVV plus g sub uu minus twice f sub uv. That would give me, मैं इन दो टर्म्स को यहीं रखूंगा, बाकी सारा दूसरे साइड पे ले जाऊंगा, so we'll get ln minus m square is equal to 1 by 2 into f twice f sub uv माइनस ई वी वी माइनस जी यू यू, क्योंकि जब इसको करेंगे तो सारी टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा दूसरे साइड पे, एंड देन आई हैव प्लस एम स्क्वायर ई प्लस ट्वाइस एम म्यू प्लस म्यू स्क्वायर जी, एंड आई हैव माइनस, जो ये बची हुई टर्म है दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक, यानी माइनस एल एन, ये एल एन ई था कि एल एन जी था, ये तो दिक्कत है, एल एन ई है यहाँ पर, यहाँ पर भी ई है, अगर मैंने गलत लिखा था यहाँ ई है, सो इट वुड बी एल एन ई, बिल्कुल वही जो हमें चाहिए, एंड वी हैव डन एल न्यू प्लस lambda n times f plus lambda न्यू g, तो ज्यादा कुछ नहीं, we found that this is equal to this, but this is the same thing as t square, यानी it implies that t square is equal to right hand side same है, n minus m square को t square किया, जो कि उसके लिए सिंबल है, और हमें मिल गया ये गाउस की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके, अब बहुत सारे लोगों ने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, राइट, एक सिंप्लीफिकेशन का तरीका ये है, तो इसको मैं एज ए कॉरोलरी वन लिखूंगा कि अगर मैं इसको इवैल्यूएट करूं, ln माइनस m स्क्वायर कैन आल्सो बी रिटन एज, क्योंकि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं, और जब हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें एग्जैक्टली वही मिलेगा, इट इज f, ये भी कोई उतना सिंपल नहीं है, आई डोंट लाइक दिस आल्सो, लेकिन क्या करें, ये फॉर्मूला ऐसा है तो ऐसा ही है, प्लस लेकिन इसमें थोड़ा सा पैटर्न सा लगता है, वी आर twice f sub u divided by h minus e sub v divided by h f e sub u divided by eh, मतलब उतना भी सिंपल नहीं, मतलब you can write it as this, so तो हम इसको दोनों को कहते हैं हम, मतलब बेसिकली Gaussian curvature is intrinsic, right? तो Gaussian curvature जो है is given by
तो corollary to Gaussian curvature is intrinsic. So Gaussian curvature k है बराबर t square by h square. तो अगर मैं ln minus m square पे ये फॉर्मूला लूंगा, that would be basically 1 by 2h, 2h नीचे आएगा, तो मतलब इसीलिए हम इसको इस फॉर्म में लाते हैं. बाकी सब कुछ ऐसे ही, f e v divided by h minus g sub u divided by h plus 1 by 2h into del by del v. Now twice f sub u h minus e sub v divided by h, then minus f e sub u divided by h. इसको भी याद रखना मुश्किल है, ऑब्वियसली u है यहाँ पे. ओके, तो वैसे भी ये भी उतना क्या बोलते हैं आसान याद रखना नहीं है, but this would be a sort of an intrinsic formula because इसमें right hand side पे you only get EFG और उनके partial derivatives है ना, यहाँ पे और कोई चीज है नहीं. तो अगर हम कहें Gaussian formula is intrinsic, this means यार लिखूंगा मैं, this formula expresses Gaussian, यहाँ लिख लो Gaussian curvature K, चलो K is equal to this. This formula expresses Gaussian curvature or simply curvature of a surface K in terms of first fundamental first fundamental magnitudes and their partial derivatives. With respect to u and v. Okay. Then there is another thing which is satisfied by this. There's a relationship between an important relationship, but हमारे syllabus में उसकी importance दिखेगी नहीं, क्योंकि we are not going to do हमारे syllabus में rightly so. वो जो fundamental theorem for space curves था हमारा, वो हमने किया, लेकिन fundamental theorem for existence of surfaces with a certain conditions with a given fundamental first and second fundamental form, जैसे वहां पे था existence of a curve with a given curvature and torsion, तो वो exist करती है. So तो कब exist करेगी, k and tau smooth होने चाहिए वगैरह वगैरह. Now there's a similar theorem for surfaces, बट हमारे सिलेबस में है कि हमें खाली उसकी स्टेटमेंट करनी है, हमें उसका प्रूफ नहीं करना. हमें लिखा है स्टेटमेंट ओनली, और उसी कनेक्शन में एक इक्वेशन है दैट्स कॉल्ड मैनाडी-कोडाजी इक्वेशन. अगर मैं यहाँ पे कहूँ इट इज जस्ट एन इक्वेशन फॉर अस, क्योंकि हम अगर उसकी सिग्निफिकेंस, उसकी इम्पोर्टेंस या वो किस काम आती है, वो काम आती है उसी में when we want to prove this fundamental theorem for space curve as a fundamental theorem for spaces. मैं क्या बोल रहा हूँ, fundamental theorem for surfaces जो है, existence theorem for surfaces, उसमें मैनाडी-कोडाजी equations important है, लेकिन हमारे सिलेबस में है. लेकिन मैं कह रहा हूँ हमारे लिए तो एक set of differential equations है, basically pair of differential equations. So हमारे लिए just a pair of differential equations है, जो हम दिखाएंगे true है, लेकिन उनके truth, उनके सच होने से क्या फर्क पड़ता है, that we won't be able to appreciate because जो fundamental existence theorem for surfaces है वो हमें prove नहीं करना, हमें खाली उसकी statement करनी. तो you will bear with me, the equations ये है equations.
So basically it is LV minus M sub U, where element has second order fundamental magnitudes, is equal to M times L minus L minus mu times M minus lambda times N, and MV minus N sub U, this means partials with respect to U and V, is equal to NL minus M minus nu times M minus mu times N. Now these are basically two partial differential equations. We have partial derivatives here we have functions of U and V. इनको हम बोलते हैं Menard-Kodazi equation. Specifically लिखना चाहिए where L, M and N are second order fundamental magnitudes. इनको derive करना वैसे आसान है for a surface, but they characterize a surface. They are very basic to the existence of a surface. वो हम नहीं करेंगे, हमें नहीं करना, हमें लिखा गया उसमें स्टेटमेंट होंगे, एंड राइटली सो, क्योंकि वो हम बिल्कुल किसी दूसरी डायरेक्शन में चले जाएंगे, हमारे सिलेबस की डायरेक्शन से अलग. Second fundamental magnitudes, and of course जैसे कि तुम्हें पता है L, M, N and lambda, mu are Christoffel symbols. Okay, इसको प्रूव करना ज्यादा मुश्किल नहीं है. What we do, we just take this partial derivatives, वो mixed है, वो equal है because of smoothness of the curve. I'd say that RUU partially differentiated with respect to V should be the same thing as RUV partially differentiated with respect to U, right? But we know by Gauss's formula that RUU can be written in terms of Christoffel symbols. So this is actually L times N plus small l times RU plus lambda times RV partially differentiated with respect to V is equal to, क्या पहले मुझे यहाँ लिखना चाहिए, we consider the identity that this would be always equal because our this is the third order partial derivative mixed, they should be equal because we are assuming that partial derivatives are continuous. The equation of our surface is smooth. Now this would be equal to RUV is M times N plus small m times RU plus mu times R sub V. We partially differentiated with respect to U. ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो फिर हम करेंगे. Okay, I can take, this would be of course LV times N plus small lv times Ru plus lambda V times Rv using the product rule, plus of course I should have Ln sub V plus small l Ruv plus lambda times Rvv. ये बराबर होना चाहिए M sub U N plus small m sub U omega R sub U plus mu sub U R sub V plus M times N sub U plus M times R sub UU plus mu times R sub UV. Let's call this equation. The left hand side, the right hand side, we partially differentiate here. Now, what we do here, we want to write, देखो these are vector equations. तो अगर हम इनको एक ही basis में दोनों sides को लाएं, then we can equate the coefficients of the basis elements. So that's idea. तो अब हमें पता है यहाँ तो RU है, यहाँ RV है, यहाँ पे N है, right? तो N को भी हम लिख सकते हैं in terms of RU and RV, right?
नॉट नेसेसरली। हाँ, नहीं नहीं, देखो, अगर हम सेम बेसिस लें, चलो मैं यहाँ पे लिखूंगा। मेरे कहने का मतलब है आर यू, आर वी एंड एन फॉर्म द बेसिस ऑफ आर थ्री, बिकॉज दे आर म्यूचुअली, दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो अगर मैं हर चीज को लिखूं इन टर्म्स ऑफ आर यू, आर वी एंड एन, दोनों साइड्स को कन्वर्ट करूं, then I can equate the coefficients of the RU, RV, and N, and then the coefficients should be equal, provided the basis is same on the both sides. N तो यहाँ पे है, यहाँ पे RU है, यहाँ पे जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुझे NV चाहिए, यहाँ पे मुझे इसको भी in terms of RU and RV, और इसको भी। अब NV and NU जो है उनको हम लिख सकते हैं RU and RV using Weingarten equations, और R sub UV, R sub VV, R sub UU को हम लिख सकते हैं बाई गाउस फॉर्मूले। तो अब ये तो लंबा चौड़ा है इसको सब्स्टिट्यूट करना, लेकिन हमारे लिए एक्चुअली उतना इशू नहीं। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग, तुम देखोगे उतना मुश्किल नहीं है। सब्स्टिट्यूटिंग again the values of R sub UU, R sub UV, R sub VV from Gauss formulae and n sub u equal to जो वाइनगार्टन्स है, यानी mf minus gl divided by h square into r sub u, right, plus fl minus em जो हमारी वाइनगार्टन इक्वेशंस है, and n sub v equal to fn minus gn divided by h square into r sub u plus fm minus en divided by h square into r sub। तो अगर मैं ये सब कुछ इसमें सब्स्टिट्यूट करूं एंड इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ n, देखो अब फायदा ये है, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ n ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, n के मुझे कोएफिशिएंट चाहिए, यानी n u n v में चूंकि n कंपोनेंट है ही नहीं, आई कैन डिसरिगार्ड n u n, क्योंकि मैं एक ही को पकड़ रहा हूँ, यानी आई कैन जस्ट रिगार्ड कि ये है ही नहीं, मतलब है तो, लेकिन मेरे जो मैं इक्वेट करने वाला हूँ मुझे सिर्फ n का कंपोनेंट चाहिए। n का कंपोनेंट यहाँ पे है lv, और n का एक कंपोनेंट आएगा इधर और दूसरा आएगा इधर, राइट, क्योंकि इसमें n का कंपोनेंट है गाउस फॉर्मूले के हिसाब से। इसी तरह से यहाँ और यहाँ आएगा n का कंपोनेंट, राइट, एन यू में नहीं आएगा, आर यू में नहीं आएगा, आर बी में नहीं आएगा। तो एन के कंपोनेंट्स में यहाँ तीन चीजें हैं, यहाँ तीन है, तो सो आर यू यू या आर यू वी किसके बराबर, चलो आर यू यू इज इक्वल टू उसका एन कंपोनेंट है ना, आर यू का एन कंपोनेंट है, हमें पता है ये है एल एन प्लस समथिंग, राइट। इसी तरह से आर यू वी जो है वो है एम टाइम्स एन प्लस समथिंग, and RVV is equal to n times n plus components of R and RV, और मैं n के इक्वेट करना चाहता हूँ। तो कहने का मतलब n का कंपोनेंट यहाँ है, और यहाँ पे क्या है, इट आर यू वी, हाँ आर यू वी है, आर यू में यहाँ पे है, यानी m है इसका कंपोनेंट n का, तो यहाँ मुझे मिलेगा स्मॉल एल एम। इसी तरह से यहाँ आना चाहिए मुझे लेमडा एन, एन कंपोनेंट है ना आरबी में, तो यहाँ का आ गया एल एम लेमडा एन और एल सब वी, राइट, और यहाँ पे आएगा इधर आर यू मी है एम एल, और यहाँ मुझे मिलेगा म्यू एन। यानी ज्यादा मुश्किल नहीं था, हालांकि अब बहुत सारा कुछ हम कह रहे हैं, लेकिन चूंकि वी आर ऑलरेडी इंटरेस्टेड इन एन, सो मुझे मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, जब मैं इक्वेट करूंगा कोफिशिएंट करूंगा, coefficients of n, I should get L sub v plus small lm plus lambda times n is equal to m sub u plus ml plus mu n. So which gives us lv
minus m sub u, पहली वाली Monadi-Corazzi equations ml minus l minus mu times m plus और कोई टर्म है हाँ lambda n lambda n plus और minus ठीक है right ml minus l मुझे लगता है minus lambda n होना चाहिए हाँ just minus lambda. So this was our first Monadi-Corazzi equations. Similarly, now again if we consider this identity, if we consider the identity कौन सी RUV partially differentiated with respect to V is equal to RVV partially differentiated with respect to U. अगर मैं वही करूँ जो मैंने इससे पहले किया and substituting the values from Gauss formulae and Weingarten and of n sub u, yeah, and from Weingarten equations and then substituting equating the coefficients of n on both sides, equating the coefficients of n on both sides, we get जो दूसरी equation है, we get m sub v minus n sub u. ये तुम करोगे as home assignment जैसे हमने वो किया था, m minus nu times m minus mu times n. So this is basically a partial differential equation. जो तुम्हें मिलेगी जो तुम करोगे जैसे हमने उसमें किया था, ज्यादा मुश्किल तो है नहीं. Now जैसे मैंने कहा था, we have to do this what we call fundamental existence theorem for surfaces. हमें इसकी स्टेटमेंट को थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा, इसमें प्रूफ नहीं करना. It says that when the coefficients E, F, G and L, M, N of the two quadratic forms, two differential quadratic forms, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि they are related to a surface, just some functions, some numbers that you can evaluate that depend upon UV, are of the two differential quadratic forms. तो उनसे हम बना सकते हैं ये v du square plus twice f du dv plus g dv square, second half course अपना l du square plus twice m du dv plus gu dv square are such that that first is positive definite, जो कि तुम्हें पता है positive definite का क्या मतलब होता है, and the six coefficients and the I've got E, F, G, L, M, N. The six coefficients satisfy Monadi-Corazzi equations, which are partial differential equations. Corazzi
अब मैंने तुम कहोगे 6 कहाँ से है ना, क्योंकि मैडी-कोड़ाज इक्वेशन तो LMN है और lambda mu nu है, but lambda mu nu can be written in are basically symbols for some functions of EFG, यानी they are in terms of EFG, यानी वो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, बट इट इज जस्ट अ सिंबल, इट्स नॉट न्यू की खुद अपनी कोई हकीकत नहीं है यार, एलिमेंट की उनका वैल्यू है जो मैंने निकाला है, वो लंबा चौड़ा है इन टर्म्स ऑफ EFG, तो मैंने गलत लिखा है यहाँ पे, EMG मैंने लिखा। सो अगर ये 6 कोफिशिएंट्स, एलिमेंट तो डायरेक्टली है लेकिन EFG इनडायरेक्टली है मनाड़ी कोडाजी की, अगर वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो मैंने बोला ना ये कॉम्प्लिकेटेड, इसीलिए हमने इसमें नहीं रखा है इसका प्रूफ, एंड द इक्वेशंस ऑफ द गाउस, यानी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस हैं, अगर वो भी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं ऑफ कोर्स, and then there exists a surface, then there always exists a surface uniquely determined within an Euclidean displacement, within an Euclidean displacement for which first and second are the first and second fundamental forms respectively. This is the statement. Basically, it is saying अगर ये जो set of differential equations है and equations of the Gauss, that means Gauss characteristic equation और वो Gauss formally, अगर वो satisfy करते हैं EFG and LMN और वो Menard-Corazzi equations को भी satisfy करेंगे, तो दुनिया में एक surface ऐसी है जिसका ये first fundamental form है, ये second fundamental form है, and it is unique up to a यूक्लिडियन डिस्प्लेसमेंट नहीं रिजिड मोशन, अगर कोई फर्क होगा तो उससे रिजिड, अगर दो उसके सॉल्यूशंस हो तो फर्क ये होगा, वन कैन बी superimposed by another via some translation and rotation. So what more can I say about that? It's akin to fundamental theorem for space curves. वहां पर भी कुछ numbers हैं जिनको हम कहते हैं k and tau, कर्वेचर एंड टॉर्शन, अगर ऐसी दो फंक्शंस एग्जिस्ट करती है जो सेरेफ्रेनिक इक्वेशंस, जो कि 3 डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, बट दे आर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, यहाँ पे दे आर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, अगर वो सेटिस्फाई होती हैं तो देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक स्पेस कर्व अप टू यूक्लिडियन डिस्प्लेसमेंट, जिसके लिए k कर्वेचर है और टाउ टॉर्शन है, और जो इक्वेशंस हैं वो उसका वो सेरेफ्रेनिक फ्रेम है TNB, तो ये उसी का एक सरफेसेस के लिए फॉर्मूला है बेसिकली. Now, if you have certain functions satisfying certain differential equations, they uniquely give us a surface. And same for जिस तरह से space curves के लिए था कि two functions that satisfy Serre-Frenet equations, which are ordinary differential equations, actually 3 of them, actually 9 of them if you consider the scalar equations. तो अगर वो सेटिस्फाई होती है तो दुनिया में एक कर्व होगी जिसका कर्वेचर k होगा, टॉर्शन टर्म होगा. इसी तरह से हम कह रहे हैं कि अगर इस तरह की फंक्शंस हैं जो सेटिस्फाई होती है इन 3 क्राइटेरियाज पे, तो देयर एग्जिस्ट सरफेस जिसके फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स. ओके, now we come to an important topic. So that was geodesics. तो जियोडेसिक्स की भी हम लोकल थियरी पे फोकस करेंगे. मतलब जियोडेसिक है क्या? जियोडेसिक इज अ कर्व ऑन अ सरफेस. मतलब अब देखो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सरफेस पे बहुत सारी कर्व्स हो सकती है ना. तो बेसिकली जियोडेसिक्स अगर मैं रफली कहूँ, इट इज द कर्व ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस.
लेकिन ऑफकोर्स वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। अगर प्लेन सरफेस हो तो हमें पता ही है, दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो होगी अपनी स्ट्रेट लाइन। सरफेस के लिए हम उसको कहते हैं जियोडेसिक। तो जियोडेसिक इज बेसिकली the the equivalent of straight lines for general surfaces. So of course अगर मैं एग्जांपल दूं, बेसिकली अगर कोई सरफेस ऐसी है जिसका कर्वेचर ऐसा है, तो जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने का सबसे जो सिंपल रास्ता होगा, नहीं सबसे जो छोटा रास्ता होगा, वो एक्चुअली होगा कि अगर वो थ्रू आउट सरफेस के कर्वेचर के साथ साथ जाए। आई डोंट नो, इट्स वेरी वेग टर्म कि सरफेस के कर्वेचर के साथ साथ जाने का क्या मतलब है। या अगर मैं इस तरह से कहूँ कि वो नाक की सीध में जाए, ठीक है, तो अगर वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो नाक की सीध वाला जो रास्ता होगा वो सबसे छोटा होगा, बिकॉज इट वुड एक्चुअली, या इस तरह से कर लो कि आपने वो गाड़ी छोड़ दी, स्टीयरिंग को ब्लॉक कर दिया, ना दाएं गए ना बाएं, तो जो जमीन का जो कर्वेचर है वो डिसाइड करेगा वो कहाँ जाएगी। वो रास्ता होगा वो सबसे छोटा होगा, टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अगर आप ऐसा करोगे तो एक्सीडेंट होगा ऑफ कोर्स, लेकिन अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ और वो चलता गया, तो एक पॉइंट से दो पॉइंट तक जब वो पहुंचेगा तो वो उस सरफेस पे सबसे छोटा रास्ता होगा। हम उसको मतलब ऑफ कोर्स अभी डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन बिफोर दैट, अगर हम सच में ऐसा करें जमीन पे, मतलब बाय अज्यूमिंग दैट इट्स अ स्फीयर, हालांकि यहाँ गड्ढे वड्ढे बहुत हैं, ठीक है ना, ये बात और है, जब मैं इतना छोटा करूंगा तब तो सवाल ही नहीं कोई गड्ढा दिखे। मेरी जमीन जो है, हमारा जो प्लेनेट अर्थ है, तब तो नहीं दिखेगा। ओके, अब अगर मैं यहाँ नाक की सीट में जाऊंगा, कीपिंग द कर्वेचर एज इट इज, मतलब मैंने गाड़ी के स्टीयरिंग को ब्लॉक किया और एक्सेलरेटर ऑन रखा, तो जो मैं जाऊंगा जिस रास्ते से, ऑटोमेटिकली क्योंकि जमीन गोल है तो मैं वापस यहाँ पहुंचूंगा, एंड दिस वुड ऑलवेज बी अ ग्रेट सर्कल। यानी सर्कल पे मैं जब घूमूंगा, इट वुड बी द सेम एज, मतलब ऑफ द सेम रेडियस एज द स्फीयर, and we would be just respecting the curvature of, मतलब कर्वेचर इसका डिसाइड करेगा गाड़ी कहाँ जाएगी, हम नहीं करेंगे। यानी वही हुआ ना, किसी में जाना दाएं बाएं अपना नहीं सोचना। So that would be always a great circle on a sphere. So great circles are geodesics on the, I mean, they are the equivalent of straight lines on our simple surface, that's the sphere, right? So इसी तरह से अगर कोई फ्लैट है तो फिर स्ट्रेट लाइन है, वो तो है ही। तो मैं जरा अभी अभी ये खत्म होने वाला है, मैं स्टॉप करूंगा इसको शेयर, ताकि हम तुम फिर से ज्वाइन करो। वैसे जागे हो सभी? हेलो, हेलो, कैन यू हियर मी? सो यस सर। यस ओके, सर। चलो मैं ये बंद कर रहा हूँ, वैसे ये खुद ही बंद हो जाएगा अभी।